Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, imagine this. It's 594 BC. There's this woman, Yung Chi. Her father, Chi Chung, he's one of the most powerful men in the state of Cheng. Right. And she faces this. Just impossible choice. Her husband has actually been ordered to assassinate her father. Wow. So she's completely torn, goes to her mother and asks, who's dearer, husband or father? What a question. And the mother's reply, it's chilling, but pragmatic. She says, any man can be a husband, but a father is simply unique. How can they even be compared? Oh, who direct. Exactly. In Yung Chi, she gets it. She tips off her father, and, well, he kills her husband to save himself. That's a stark story, isn't it? It really is. It just perfectly captures how deeply tangled, personal relationships and political survival were back then in ancient China. Yeah. This wasn't just some dramatic tale. It's a real window into a world where marriage was, well, it was far more than just a personal union. Absolutely. And it's exactly these kinds of fascinating, almost unbelievable insights into ancient Chinese society that we want to explore today. Now, this discussion, it's a summary based on a truly remarkable chapter, rigorously peer-reviewed. It's called Marriages of the Ruling Elite in the Spring and Autumn Period. Okay. The chapter is authored by Dr. Melvin P Thatcher, who's affiliated with the Genealogical Society of Utah. And it's part of this really seminal book, Marriage and Inequality in Chinese Society, edited by Ruby S. Watson and Patricia Buckley Ebre, published by University of California Press back in 1991. And Dr. Thatcher's work, it really is a classic in its field. You'll see why. He's a researcher of the Chao era, spent decades digging into the society, the government, the historiography of the Eastern Chao period. His life's passion, really, and his son, Professor Jason B. Thatcher, who's a well-known scholar himself in information science, put it beautifully. It's been collecting and curating the genealogies of the Chinese people. That's an incredible dedication, isn't it? His son shared that Dr. Thatcher, even now at almost 80, he's still presenting on this life's work at conferences and things. Amazing. And he's credited with collecting the largest set of Chinese family records in the world. Records that were actually at risk, because of cultural and political shifts. That's right. He organized people, apparently, to go door to door in Taiwan, gathering records from families who'd moved there with the nationalists. Wow. And then painstakingly digitize them, making them available to everyone in China and for the Chinese diaspora around the world. It's such a powerful example of the real, tangible impact that humanities research can have. It really is. Professor Thatcher put it so well. He said, anytime someone tells you a humanist has no impact, point to Melvin Thatcher and say they do. They curate our shared histories, shed light on our shared narratives, and help us understand who we were, who we are, and what we will become. That's beautifully put. He goes on to say this contribution matters, regardless of whether we live in an oral, paper, or digital world, because it touches something fundamental, that basic human need to know where we come from, who we are, and what is our potential to become. This is the gift of the humanities to the rest of us. What a profound justification for this kind of deep scholarly work. So for you listening, maybe you're new to academic research, maybe just starting out, or maybe you're just curious about how we figure this stuff out. This exploration today is really designed to give you a clear, hopefully engaging way in. We want to show you how careful historical analysis, like Dr. Thatcher's, pulls these vital insights out of ancient sources, like the Chunchu and the Sichuan. Okay, so to really get a handle on the world Dr. Thatcher is analyzing, let's just set the scene a bit historically. Good idea. We're diving into the spring and autumn period. That's roughly 770 to 453 BC. It's the first part of the Eastern Chao era. Right. And this was a really pivotal time because the Chao kings, well, they'd lost a lot of their actual power, their real influence. Yeah. This led to a complex multi-state system across much of what we now call China. And that power vacuum didn't stay empty for long, I assume? Not at all. It was filled by these powerful regional rulers. They're often called hegemons. And they basically took it upon themselves to manage interstate relations, holding summits, making covenants, that sort of thing. So they were the real players. Pretty much. And this led to a whole system of state rankings. First-rate states, second-rate, third-rate. And this wasn't just for show. It deeply influenced everything, including, crucially, how marriage alliances were made. Interesting. Yeah, it was a very stratified society back then. The king of Chao was still, symbolically at the top. But the real power, that lay
with the ruling households in the various states and the different ranks of officials below them, the Qing, high ministers, taifu, grandmasters, shi, sort of lower nobility. Were those positions fixed? Some offices were hereditary, yes, but a lot of the really significant ones were appointed by the rulers, and that created intense competition between the powerful lineages, all vying for those hereditary rights. Which must have meant things could change quite quickly. Absolutely. That competition fueled a surprising amount of social mobility, especially, at the top levels. People, even whole groups, could rise or fall based on how they performed their political maneuvering. So a very dynamic, maybe unstable environment? Exactly. Very dynamic, often unstable. Alliances could shift dramatically. And what was the economy like? What was underpinning all this? It was primarily agricultural, based on intensive farming. Now, technically, all of the land belonged to the King of Shao. Ah, the theory. Right, the theory. In practice, it was held by state rulers and these big aristocratic lineages. But over time, especially around the 6th century BC, you see things changing with iron tools, ox-drawn plows. Private land ownership starts to emerge. But the lineage land was still dominant. Oh, yes. Lineage-held land remained key. And alongside farming, you had growing cottage industries. Trade was expanding. It was a complex picture. Okay. And what about family structure? Kinship. Kinship was absolutely central. It was a patrilineal system, everything. Lineage, inheritance, traced through the father's line. So we're talking clans, lineages, families. Exactly. You had clans, these larger groups tracing back to a common, sometimes mythical ancestor. Then lineages, which were more immediate family groups with a documented common ancestor. And then individual families. And marriage rules. I remember reading about clan exogamy, not marrying within your clan. Yes, that rule existed. Male and female distinguished clan names, the saying went. But interestingly, it was broken quite often. Really? Why? Well, because the patrilineage, that more immediate family group, had become the really critical unit. People strictly avoided marrying within their own patrilineage, but the broader clan, political needs often trumped that older rule. Got it. So the lineage was the key functional group for marriage rules. Precisely. And this whole context is really important when we think about women's status during this period. Generally speaking, it was inferior. How do we see that? Several ways. Their given names were often suppressed after marriage. Their rank depended entirely on their husbands. Even funerary practices showed less respect for women compared to men. Some scholars even argue wives didn't really have the right to own private property. Which could lead to issues later on, you mentioned. Possibly, yes. Some suggest it could even be grounds for a forced divorce. Okay, so that's the general background. How did all this play out specifically in the marriage practices of the ruling elite? Was it different from, say, later imperial China, especially regarding how many wives a ruler could have? That's a really key question. And yes, it was different. Unlike later imperial China, where the ideal was basically one wife plus concubines. Right. In the spring and autumn period, these ruling elites could actually have more than one primary wife at the same time. Multiple primary wives. Yes. You see distinctions like a principal primary wife, a second primary wife, maybe even a third. That is a significant difference. What was the thinking behind that? Why have multiple primary wives? Well, there were two main reasons. First, obviously, the desire for children, especially heirs. More wives meant a better chance of securing the succession. Makes sense. Second, and this is critical, it was about politics. Extending and cementing political alliances with other powerful families and states. So examples. Sure. There's Duke Chuang of Wei. His principal wife was barren, so he just took his son by another consort and designated him as the legitimate heir, or Duke Wen of Qin. After he became ruler, he apparently favored a captive concubine so much that he essentially let her rank above other wives. It shows how fluid things could be. So it wasn't just collecting wives, it was a structured system with political goals. Now, I've also heard about something called sororal polygyny, where the main bride brings along relatives. Yes, the Kasa ring, that's right. Often, a principal bride would be accompanied by her nieces, or maybe younger sisters. These women became secondary wives at the same time. And what was their role? Why bring them along? They served really vital functions for the bride's lineage. If the principal wife couldn't have children or her children died young, these secondary wives were there to make sure an heir still came from her family line. Insurance, in a way? Kind of, yeah. They could even step into the primary wife's role, though not her full status if the primary wife died. And what's really interesting is what happened if the main wife was divorced. Right.
Even if the principal wife was sent back, the husband often kept these secondary brides. Why? To preserve those crucial political ties with the in-laws' family. That connection was too important to just sever completely. Fascinating. Okay, so we have primary wives, secondary wives, and then concubines. How did they fit in? How were they acquired and treated? Concubines were definitely distinct. They could be acquired in all sorts of ways, maybe sent as gifts from other powerful families. Sometimes fathers just sent their daughters, or women might even voluntarily join a ruler's harem. Was there any ceremony involved? Sometimes, if a concubine came from a particularly powerful lineage, the ruler might observe some kind of shortened marriage rites. But for most, no ceremony at all. And their treatment. Often, they were treated essentially as personal property. The examples Dr. Thatcher cites are quite stark. Like what? Well, Duke Shen of Wei apparently had a music teacher flogged just for whipping one of his concubines. Ouch. And then there's Wei Wuzu of Qin, who, on his deathbed, ordered a childless concubine to be buried alive with him. Good grief. That's brutal. It really paints a picture, doesn't it? It certainly does. But despite that kind of treatment, could concubines ever gain real influence? Surprisingly, yes, some did. Despite their lower formal status, if they gained the ruler's favor, they could become quite influential. Think of Duke Huan of Qi. He apparently had 6 favorite concubines who he treated almost like primary wives. So personal feelings could override the rules sometime. It seems so. It shows there was this clear hierarchy, wives, concubines, all with formal ranks within the household, but there was also room for personal dynamics and power shifts. And these ranks mattered hugely for the children, right? For succession. Absolutely. A woman's rank directly impacted her children's status and their chances of becoming the heir. The general rule, the ideal, was that the eldest son of the principal primary wife should inherit. And messing with that order was seen as bad. Very bad. Overturning that established order was seen as destabilizing not just the family, but society itself. Okay, this structure is complex. How were these marriages actually formalized? You mentioned rituals earlier. Yes, the whole process of betrothal and wedding was incredibly elaborate. Dr. Thatcher describes a 14-step process. 14 steps. Yeah, starting from the initial inquiry all the way to the new couple formally reporting to the groom's ancestral temple, which made the marriage valid. Wow. Was there one step that was absolutely crucial for defining a woman's status? Definitely. It was the formal petition for betrothal, which was called pin. Pin. Yes. Without that formal pin, a woman, no matter her background, was technically just a concubine, not a primary wife. So that document was key. Absolutely key. And these rituals, they weren't just family affairs. They directly reflected and reinforced interstate politics. Specific ranks of officials had to be involved in exchanging gifts, fetching the bride, escorting her, all depending on the relative status of the two states involved. Politics everywhere. Everywhere. Now, we also see these formal payments or prestations. There were betrothal gifts coming from the groom's side, sort of like bride wealth, but Dr. Thatcher notes they didn't circulate back and forth in the same way. Okay. And the other type? Dowry. That was property given to the bride by her own family, her kinsmen. And could that dowry be significant? Oh, absolutely. Dowries could include really valuable things. Bronze vessels, servants were common examples, and they could be incredibly costly. Thatcher mentions records talking about taxing grant lands to pay for them. Meaning they might have to leverage major assets, even land grants, just to afford the dowry. Exactly. It shows the scale of these elite exchanges. Now, going back to marriage rules for a second. You mentioned earlier that the rule about not marrying within your clan exogamy was often broken. That's right. Why? Especially if they believed it could cause, physiological problems for the children. It's a great question. And the answer really comes down to politics again. Urgent political needs in that fragmented multi-state system just outweighed those older clan considerations most of the time. Because the lineage had become more important. Precisely. The patrilineage had basically replaced the clan as the key kin group people identified with and felt bound by. Lineage exogamy, not marrying within your immediate patrilineage, that rule was strictly followed. But the wider clan, less so. Okay. This actually touches on an academic debate, doesn't it? About marriage patterns. Some scholars had theories about specific types, like always marrying a mother's brother's daughter.
Yes, exactly. There was this hypothesis about matrilateral cross-cousin marriage, or MBD, and tied to that was this idea of maternal uncle and sororal nephew states, suggesting these one-way relationships where the family receiving the wife always had higher status. Like a fixed hierarchy in marriage exchange. Kind of, yeah. But what's really interesting is that Dr. Thatcher's detailed research in the Chunchu and Sichuan didn't support that. How so? Well, he looked closely at the terms used, like chu, which could mean maternal uncle, but also father-in-law, and sheng, meaning sister's son, but also daughter's husband. Okay. And he argued these terms actually imply reciprocal or bilateral relationships, not just one-way ones. He found many examples of lineages marrying back and forth, both giving and receiving daughters. So it wasn't always asymmetrical. No. And crucially, the political strength of the wife givers and wife receivers was often pretty equal. Even the royal house of Chao, which had the highest ritual status, both sent daughters out and received brides from states with lower ranks. So Thatcher's evidence points away from a strict one-way system. Exactly. It suggests the reality was much more complex, much more balanced, and driven by immediate circumstances rather than a fixed rule about marrying cousins in one specific direction. So taking all this together, what's the big picture? It really seems like marriages among these elites were driven overwhelmingly by politics, right? That's the unavoidable conclusion. Far more than by any set genealogical preference or even strict social status rules. They were tools. Absolutely. Flexible political tools. They weren't usually about creating permanent, unchanging alliances. They were used to seal specific agreements, to signal friendly intentions, to recognize another state's status, and maybe most importantly, to secure support and protection in that constant struggle for power and survival. Can you give an example of that strategic use? Sure. Think about the state of Qin. When Qin was rising in power, it strategically received brides from weaker states. Why? To help secure their allegiance. But later, when Qin was the dominant power, the hegemon, it made different strategic moves. It might send a daughter far away to marry into the ruling family of Wu, a rival state, or receive a bride from another major power like Qi. Adapting the strategy based on the current political landscape. Precisely. These marriages were instruments of statecraft, constantly adapting to the shifting sands of alliances and rivalries. This also puts a huge amount of pressure and responsibility on the woman being married off, doesn't it? She's essentially a political agent for her birth family. Absolutely. Her role wasn't just personal. She was expected to use her position, her influence within her husband's court, to look out for her home state's interests, and of course to produce heirs who would be inclined to maintain those friendly ties. Which brings us back to young Qi at the beginning. Exactly. Her dilemma, her ultimate loyalty to her father over her husband, is that perfect, if tragic, illustration of where her primary duty was seen to lie. And what about divorce? Was that also political? Profoundly so. Divorce was allowed, sure, but it wasn't always about personal reasons like incompatibility. It could be forced on a couple by their kinsmen or undertaken specifically for political goals. But here's the really strange part, according to Thatcher. Yes, the discontinuity. A divorce could happen. The individual wife could be sent back without actually breaking the underlying final tie between the two lineages. How does that even work? It's hard to wrap our modern heads around, isn't it? But the idea was that the marriage relationship, the political bond between the families, could be preserved even if the individual woman was returned. Do we have an example of that? Yes. Duke Huan of Qi. At one point, he requested to break off his personal relationship with Shu Qi, who is from the state of Lu. Okay. But the records explicitly state that the marital relations with the ruling house of Lu were preserved. And get this, even after Shu Qi died sometime later, Duke Huan still took her body back to Qi for a proper burial, treating her almost as if she were still his wife. It just shows how deeply these personal unions were embedded in the larger structure of state relations. The individual marriage might end, but the political alliance between the lineages, that often endured. So wrapping this up, what's the enduring lesson for us from Dr. Thatcher's incredible research here? I think it really illuminates the spring and autumn period, not just as, a time of shifting power and warfare, but as a time of incredibly intricate social engineering. Marriage wasn't just a personal affair, not even close. It was this sophisticated, highly flexible, and often pretty ruthless political instrument. It really is amazing how that kind of dedicated, lifelong humanistic research, like Dr. Thatcher's, can uncover such vital, detailed insights into our shared past.
Makes you wonder, doesn't it? How do those dynamics, power, alliance building, even that fundamental human need for heritage and knowing where you come from, which Dr. Thatcher's work itself helps to filter, how do those things continue to subtly shape our world today? Even when the specific customs, like polygyny or elaborate rituals, have long faded away. That's a really profound thought to end on. What needs stay constant? How do they just manifest differently across time and cultures? Exactly. Well, this exploration has really only scratched the surface of the richness in Dr. Thatcher's work. Oh, absolutely. We genuinely hope, if this has sparked your interest, that you'll delve into the full chapter. It's the best way to really appreciate the depth and the precision of this kind of academic research. Seriously, whether you subscribe to this channel or not, please try and make time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article. You won't regret it, and you'll find the link to the book chapter right there in the show notes. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো একবার, প্রাচীন চীনের এক শাসক ডিউক হুয়ান অফ চি, ওনার 3 জন স্ত্রী ছিলেন যাদের কারোরই সন্তান হয়নি, কিন্তু তারপরেও আরও 6 জন প্রিয় উপপত্নী ছিল, আর তাদের মর্যাদাও ছিল প্রায় স্ত্রীর মতোই। হ্যাঁ, এই একটা ঘটনাই কিন্তু প্রাচীন চীনের সেই সময়ের স্প্রিং অ্যান্ড অটম পিরিয়ডের অভিজাত সমাজে বিয়ের ব্যাপারটা যে কত জটিল ছিল তার একটা আঁচ দেয়। ঠিক, আর আজকের আলোচনাটা মূলত এই রকমই কিছু বিষয় নিয়ে। আমরা কথা বলছি ডক্টর মেলভিন পি থ্যাচারের লেখা একটা অসাধারণ অধ্যায় নিয়ে। অধ্যায়টা রয়েছে ম্যারেজ অ্যান্ড ইনইকুয়ালিটি ইন চাইনিজ সোসাইটি বইটাতে। রুবি এস ওয়াটসন আর প্যাট্রিশিয়া বাকলি ইব্রেই সম্পাদনা করেছেন। হ্যাঁ, আর 1991 সালে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস থেকে বেরিয়েছিল। ডক্টর থ্যাচার উনি তো ইউটাহার জিনিওলজিক্যাল সোসাইটির সাথে যুক্ত চৌ রাজবংশ নিয়ে গবেষণা করেন। একদম। আর এই অধ্যায়ে উনি স্প্রিং অ্যান্ড অটম পিরিয়ডের ধরুন 770 থেকে 453 খ্রিস্টপূর্বাব্দ সেই সময়কার শাসক অভিজাতদের বিয়ের রীতিনীতিগুলো দারুণভাবে তুলে ধরেছেন। আর ডক্টর থ্যাচারের কাজটা কিন্তু শুধু একটা একাডেমিক লেখা নয়, এর পেছনে একটা গভীর নিষ্ঠা জড়িয়ে আছে। ঠিক তাই। ওনার ছেলে অধ্যাপক জেসন থ্যাচার, উনি নিজেও একজন নামকরা গবেষক, প্রায়ই বলেন তার বাবার কথা। ডক্টর থ্যাচার প্রায় 80 বছর বয়সেও চীনা জনগণের বংশতালিকা সংগ্রহ আর সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার কাজ করে গেছেন। কনফারেন্সেও বলতেন সেসব নিয়ে। ভাবা যায়? হ্যাঁ, মনে করা হয় উনি চীনা পরিবারগুলোর এমন সব রেকর্ড সংগ্রহ করেছেন যা হয়তো চীনের রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের কারণে হারিয়েই যেত। সেগুলোর ঝুঁকি ছিল। কি অসামান্য কাজ! তাইওয়ানে যে পরিবারগুলো চলে গিয়েছিল তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য জোগাড় করে সেগুলোকে ডিজিটাইজ করেছেন, যাতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা চীনারা তাদের বংশধররা নিজেদের শিকড় জানতে পারে। অসাধারণ। অধ্যাপক থ্যাচার যেমনটা বলেন, এই ধরনের কাজগুলোই তো আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে আমরা কারা ছিলাম, এখন কে, আর ভবিষ্যতে কি হতে পারি। মানববিদ্যা বা হিউম্যানিটিজের এটাই তো সবচেয়ে বড় অবদান। নিষ্ঠা আর গবেষণা আছে, তা সত্যি অসামান্য। একদম। আর যারা গবেষণা শুরু করতে চলেছেন তাদের জন্য এই আলোচনাটা বা আরও ভালো হয় যদি মূল লেখাটা পড়েন, খুব কাজের হতে পারে। হ্যাঁ, আমরা তো বলবই আপনারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, এই দারুণ লেখাটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করবেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। তো চলুন এবার মূল আলোচনায় আসি। এই অধ্যায়ে ঠিক কি পাওয়া যাচ্ছে? আচ্ছা, ডক্টর থ্যাচার মূলত সুচুয়ান বলে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলের ওপর ভিত্তি করে কাজটা করেছেন। এটা হলো সেই সময়ের ঘটনার একটা বিস্তারিত বিবরণ আর কি। আচ্ছা। সেখান থেকে উনি প্রায় 150টা বিয়ের ঘটনা বিশ্লেষণ করেছেন। তার মধ্যে 126টাই ছিল শাসক পরিবারের। ধরুন রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা বা তাদের ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনি, এদের বিয়ে। আর সবচেয়ে যেটা অবাক করার মতো বিষয়, যেটা আপনি শুরুতেই বলছিলেন, এই শাসকরা নাকি একই সাথে একাধিক প্রাথমিক স্ত্রী বা ফুজেন রাখতে পারতেন। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে বড় পার্থক্য পরের যুগের সাথে। শুধু তাই নয়, এই স্ত্রীদের মধ্যেও আবার একটা স্তরভেদ ছিল। যেমন প্রধান স্ত্রী বা ইউয়ান ফেই, দ্বিতীয় স্ত্রী বা ফেই, এরকম। ডিউক হুয়ানের কথা তো শুনলামই শুরুতে, কিন্তু এর কারণ কি ছিল?
মানে এতজন স্ত্রী রাখার কারণটা? কারণটা আসলে মূলত রাজনৈতিক আর সামাজিক। তখন তো চীন একটাই বড় সাম্রাজ্য ছিল না, অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ করা ছিল। ঠিক। তো এই একাধিক বিয়ে শাসক পরিবারগুলোর মধ্যে জোট বাঁধতে, সম্পর্ক ভালো রাখতে সাহায্য করত, আর অবশ্যই বংশধর বা উত্তরাধিকারীর সংখ্যা বাড়াতেও কাজে দিত। তার মানে ক্ষমতা আর বংশরক্ষা। হ্যাঁ, বলতে গেলে তাই। এমনকি উপপত্নীদেরও অনেক সময় স্ত্রীর কাছাকাছি মর্যাদা দেওয়া হতো, যদিও সামাজিকভাবে হয়তো সেটা পুরোপুরি স্বীকৃত ছিল না সব সময়। আচ্ছা, আর একটা বেশ অদ্ভুত প্রথার কথাও তো জানা যায়, সোরোরাল পলিগেনি, মানে ইং প্রথা। ও হ্যাঁ, ইং। মানে যখন একজন শাসক বিয়ে করছেন তখন কনের সাথে তার ভাগ্নি বা ছোট বোনকেও পাঠানো হতো। এটা কেন? এটার পেছনের ভাবনাটাও বেশ কৌশলপূর্ণ। ধরুন, প্রধান স্ত্রী যদি সন্তান জন্ম দিতে না পারলেন বা তার ছেলেমেয়েরা যদি মারা গেল, তাহলে যাতে উত্তরাধিকারী কনের নিজের বংশ বা খুব কাছের আত্মীয়দের মধ্যে থেকেই আসে। বাহ, মানে সব দিক থেকেই বংশ আর ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা। একদম, সবকিছুই খুব হিসেব করে করা হতো। বিয়ের রীতিনীতিগুলো নিশ্চয়ই খুব জমকালো আর আনুষ্ঠানিক ছিল। তা তো বটেই, অনেকগুলো ধাপ ছিল। যেমন ধরুন, পিন্টিং বা বাগদানের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওয়া, উপহার আদান প্রদান করা, পূর্বপুরুষদের মন্দিরে জানানো, কনেকে বরের বাড়ি নিয়ে আসা, সবার সামনে পরিচিত করানো। এই সব আচার অনুষ্ঠানগুলো কিন্তু শুধু দুটো পরিবারের মিলন ছিল না। তাহলে এগুলো বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেকার সম্পর্ক, সামাজিক স্তরবিন্যাস, এই সব কিছুকেই তুলে ধরত, আরও মজবুত করত। যৌতুক দেওয়ার প্রথাও ছিল, যেটা কনের পরিবার দিত। এটা কনের মর্যাদা বাড়াতো আর কি। আচ্ছা, বংশের মধ্যে বিয়ে নিয়ে নিয়ম কি ছিল? আমরা তো জানি একই বংশে বিয়ে হয় না। একই বংশধারা বা লিনিয়েজ, সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিয়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তার মানে রাজনৈতিক লাভটা বংশের পুরনো নিয়মের থেকেও বড় হয়ে যেত মাঝে মাঝে। অনেক সময় এইটাই দেখা গেছে। তাহলে এই বিয়েগুলো আসলে ব্যক্তিগত পছন্দের চেয়ে অনেক বেশি ছিল রাজনৈতিক চাল, তাই তো? হ্যাঁ, একেবারেই তাই। শাসকরা অন্য রাজ্যের শাসক পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি করতেন, চুক্তি পাকা করতে বা বন্ধুত্ব বোঝাতে বা নিজেদের নিরাপত্তা বাড়াতে। ইন্টারেস্টিং। আর বিয়ে হয়ে আসা মহিলারাও কিন্তু চুপচাপ থাকতেন না। তারা তাদের বাবার বাড়ির রাজ্যের স্বার্থ দেখতেন। এমনও হয়েছে যে স্বামীর রাজ্যের নীতির বিরুদ্ধেও গেছেন তারা। তার মানে বেশ একটা টানাপোড়েন চলতই তো। তবে হ্যাঁ, সবসময় যে সম্পর্ক টিকত তা নয়। ব্যক্তিগত কারণে বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ হতো। সম্পর্ক ভেঙেও যেত। হ্যাঁ, যেত। কখনো হয়তো কনেকে বাবার বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, হয়তো কৌশলগত কারণে বৈবাহিক সম্পর্কটা খাতায় কলমে পুরোপুরি শেষ করা হতো না। আচ্ছা, তাহলে এই স্প্রিং অ্যান্ড অটম পিরিয়ডের বিয়ের এই রীতিনীতিগুলো, মানে এই একাধিক প্রাথমিক স্ত্রী বা ইং প্রথা, এগুলো পরের সাম্রাজ্যিক চীন থেকে বেশ আলাদা ছিল, এই তো? হ্যাঁ, এটাই মূল কথা। ওই সময়কার খণ্ডিত বহুরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাই এই বিশেষ রীতিনীতিগুলোর জন্ম দিয়েছিল। পরে যখন একটা কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য তৈরি হলো, রাজনৈতিক আর সামাজিক পরিস্থিতিও বদলে গেল। পুরনো অভিজাত তন্ত্রের জায়গায় নতুন শাসকরা এলেন, তাদের রীতিনীতিও পাল্টে গেল। যেমন ওই একসাথে একাধিক প্রাথমিক স্ত্রী রাখার ব্যাপারটা আর চলল না। ঠিক তাই। আচ্ছা, একটা জিনিস ভাবছিলাম, এই যে এত পুরনো দিনের সম্পর্ক, ক্ষমতা আর রাজনীতির খেলা, এগুলো জানাটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের নিজেদের সমাজ বা সম্পর্কগুলোকে বুঝতে কি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারে? কি মনে হয়? এটা কিন্তু একটা ভাবার মতো প্রশ্ন রেখে গেলাম। অবশ্যই ভাবার মতো। আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক। যদি এই বিষয়ে আরও গভীরে জানতে ইচ্ছে করে, তাহলে অবশ্যই ডক্টর থ্যাচারের মূল লেখাটা পড়ুন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আমরা আবারও বলছি, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা বা না করাটা বড় কথা নয়, কিন্তু এই অত্যন্ত মূল্যবান লেখাটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করলে সত্যি লাভ হবে। একদম। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। सोचिए, अगर आपकी कंपनी ज्यादा से ज्यादा नए आइडियाज बाहर से इकट्ठा करना चाहे, तो ये तो इनोवेशन के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, लगता तो यही है। पर क्या वाकई ऐसा है?
क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा खुलापन फायदे की जगह नुकसान करने लगे? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और देखिए इसी की पड़ताल करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जर्नल में 2006 में प्रकाशित एक बेहद अहम शोध पत्र। ओह, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जर्नल, ये तो बहुत बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि ये जर्नल प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 50 जर्नलों मतलब FT50 लिस्ट में शामिल है। हाँ, मुझे याद है इस पत्र का शीर्षक है ओपन फॉर इनोवेशन, द रोल ऑफ ओपननेस इन एक्सप्लेनिंग इनोवेशन परफॉर्मेंस अमंग यूके मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। बिल्कुल, और इसके लेखक हैं प्रोफेसर केल्ड लॉर्सन जो कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल से हैं और प्रोफेसर अमन सॉल्टर जो उस समय इंपीरियल कॉलेज लंदन में थे। और ये पेपर कितना प्रभावशाली है ये भी तो देखिए। हाँ, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि 2021 में इसे SMJ बेस्ट पेपर अवार्ड मिला और गूगल स्कॉलर के मुताबिक इसे 9000 से ज्यादा बार साइट किया जा चुका है। 9000 बार, जबरदस्त। ये तो वाकई एक क्लासिक पेपर बन गया है। हाँ बिल्कुल, और एक दिलचस्प बात यह भी है, इसके पहले लेखक प्रोफेसर केल्ड लॉरेंसन ने इस कार्यक्रम के निर्माता के एक वर्किंग पेपर पर कोपेनहेगन में हुई एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस यानी AOM 2025 की ओपन इनोवेशन PDW मतलब पेपर डेवलपमेंट वर्कशॉप में अपनी बहुत कीमती राय दी थी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम सभी सुनने वालों से ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं, लेकिन इस गहरे और बारीकी से जांचे परखे गए लेख को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। हाँ प्लीज, इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। अच्छा, तो चलिए अब इस शोध को थोड़ा और समझते हैं, खासकर उनके लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं या शायद अपना शोध शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये पत्र मूलतः इस बात की जांच करता है कि कंपनियां नए विचारों और टेक्नोलॉजी के लिए बाहरी स्रोतों का इस्तेमाल कैसे करती हैं और इसका उनकी नई चीजें बनाने की क्षमता यानी इनोवेशन परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। तो लेखकों ने ओपननेस यानी खुलेपन के 2 खास पहलुओं पर ध्यान दिया है ना? हाँ, 2 पहलू। पहला है एक्सटर्नल सर्च ब्रेड्थ यानी चौड़ाई। हाँ, एक तरह से इसका मतलब है कि कोई कंपनी कितने अलग अलग तरह के बाहरी स्रोतों से जानकारी लेती है, जैसे ग्राहक हो गए, सप्लायर, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि अपने प्रतियोगी भी। ये संख्या उन्होंने देखा 16 तक हो सकती है। 16 अलग अलग तरह के सोर्स, ठीक है। और दूसरा पहलू? और दूसरा पहलू है एक्सटर्नल सर्च डेप्थ मतलब गहराई। बिल्कुल, यानी कंपनी इन चुने हुए बाहरी स्रोतों से कितनी गहराई से या कह लीजिए कितनी गंभीरता से जानकारी या ज्ञान हासिल करती है। समझ गई। तो एक तरफ कितने अलग सोर्स ब्रेथ और दूसरी तरफ कुछ सोर्स से कितनी गहराई से जानकारी डेप्थ। एग्जैक्टली। और इसके लिए शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन की 2700 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के डेटा का विश्लेषण किया। अच्छा खासा बड़ा सैंपल साइज है। हाँ बिल्कुल, और यहीं से नतीजे बहुत रोचक होने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोज ये थी कि इनोवेशन परफॉर्मेंस और इन दोनों पहलुओं ब्रेथ और डेप्थ के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं है। सीधा नहीं तो फिर कैसा? बल्कि एक घुमावदार रिश्ता है जो उल्टे यू अक्षर जैसा दिखता है। इन्वर्टेड यू शेप। उल्टे यू जैसा। अच्छा, मतलब ये हुआ कि शुरुआत में ज्यादा अलग अलग स्रोत ब्रेथ इस्तेमाल करने से या कुछ स्रोतों से ज्यादा गहराई डेप्थ में जाने से इनोवेशन बढ़ता है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक हद तक। बिल्कुल सही। एक सीमा के बाद जिसे हम टिपिंग पॉइंट कह सकते हैं, और ज्यादा स्रोत जोड़ना या और ज्यादा गहराई में जाना फायदेमंद नहीं रहता, बल्कि नुकसानदायक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कंपनियां एक तरह से ओवर सर्च यानी जरूरत से ज्यादा खोजबीन करने लगती हैं, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, फोकस खो जाता है। ये तो बड़े काम की बात है। क्या कोई अंदाजा है कि ये टिपिंग पॉइंट कहाँ आता है, जैसे कोई नंबर? हाँ, उन्होंने कुछ अंदाजे दिए हैं, जैसे रेडिकल इनोवेशन के लिए मतलब बिल्कुल नए तरह के उत्पाद बनाने के लिए लगभग 11 अलग अलग स्रोतों ब्रेड्थ तक जाना। 11 तक? या फिर करीब 3 स्रोतों से बहुत गहराई डेप्थ से जानकारी लेना, यह सबसे ज्यादा फायदेमंद पाया गया। इसे ज्यादा करने पर फायदा कम होने लगता था। दिलचस्प। और क्या ये भी फर्क पड़ता है कि कंपनी किस तरह का इनोवेशन कर रही है? मेरा मतलब है, क्या नए प्रोडक्ट बनाने और पुराने प्रोडक्ट को सुधारने के लिए अलग अलग अप्रोच बेहतर है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। शोध में यही पाया गया। रेडिकल इनोवेशन यानी दुनिया के लिए कुछ एकदम नया बनाने के लिए डेप्थ ज्यादा कारगर साबित हुई। यानी कुछ चुनिंदा स्रोतों से गहरी जानकारी लेना। हाँ, सोचिए, अगर आप कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं तो शायद आपको कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बहुत गहराई से काम करने की जरूरत होगी। सही बात है। तो फिर इंक्रीमेंटल इनोवेशन यानी मौजूदा चीजों में छोटे मोटे सुधार करने के लिए? उसके लिए ब्रेड्थ ज्यादा फायदेमंद पाई गई।
मतलब कई अलग अलग स्रोतों से थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना। अच्छा, जैसे अगर आपको सिर्फ अपनी गाड़ी थोड़ी बेहतर बनानी है। हाँ, तो आप शायद कई मैकेनिकों से, ग्राहकों से थोड़ी थोड़ी सलाह लेंगे। ये हुई ब्रेड्थ। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नई तरह की गाड़ी ही बनानी है तो शायद आप किसी एक डिजाइन गुरु या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के साथ बैठकर घंटों बिताएंगे। वो हुई डेप्थ। ये तो बहुत साफ हो गया। क्या कोई और चौंकाने वाली बात सामने आई इस रिसर्च में? हाँ, एक और थी, और वो काफी हैरान करने वाली थी। कंपनी के अपने अंदरूनी R&D खर्च और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता, यानी ओपननेस के बीच। हाँ, उम्मीद के मुताबिक पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री रिश्ता नहीं मिला कि भाई दोनों साथ साथ चलेंगे। तो फिर? बल्कि सब्स्टिट्यूशन प्रभाव देखा गया, मतलब एक दूसरे की जगह लेने वाला असर। सब्स्टिट्यूशन मतलब जिनका अपना R&D मजबूत था वो बाहर कम झांक रहे थे, और जिनका कमजोर था वो बाहरी स्रोतों पर ज्यादा निर्भर थे। ये तो थोड़ा अजीब है, ऐसा क्यों? हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। ये इस ओर इशारा कर सकता है जिसे नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम कहते हैं। मतलब हमारी टीम ने नहीं बनाया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अंदरूनी टीम बाहरी आइडियाज को कम आंकती है। हाँ, या फिर ये ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है। मतलब सीमित संसाधन है तो या तो अंदरूनी R&D पर लगाओ या बाहरी खोज पर। दोनों पर शायद एक साथ फोकस करना मुश्किल हो। ये भी एक वजह हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? देखिए, मुख्य संदेश ये है कि इनोवेशन के लिए बाहरी दुनिया से सीखना, खुला रहना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें संतुलन साधना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संतुलन, हाँ। आंख बंद करके हर दरवाजे पर दस्तक देना या हर सूत्र की तह तक जाने की कोशिश करना, ये हमेशा सही रणनीति नहीं होती। जरूरत से ज्यादा खुलापन भी भारी पड़ सकता है। तो मतलब कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, बस सही मात्रा में खुलापन जरूरी है। बिल्कुल, वो सही मिक्स ढूंढना जरूरी है जो आपकी जरूरत और आपके इनोवेशन के लक्ष्य पर निर्भर करेगा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये शोध हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कंपनियां ये कैसे समझें कि कब वे बाहरी ज्ञान की तलाश में बहुत ज्यादा कर रही हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वो टिपिंग पॉइंट कैसे पहचाना जाए जहां खुलापन फायदे की जगह नुकसान देना शुरू कर देता है। इस पर सोचने की जरूरत है। 想象一下啊，2000多年前，在古代中国，有位女性，她身处权力的中心，然后呢，她的丈夫命令她去杀自己的父亲。你说她该怎么办？父亲和丈夫哪个更亲？她母亲就这么问她，然后回答的非常直接，任何男人都可能成为你的丈夫，但父亲你只有一个。只有一个。最后，这位女性选择了父亲。她的丈夫也因此丧命。这个故事真是让人心头一紧，但也正好把我们带到了今天想和你一起聊的话题，就是古代中国春秋时期，也就是大概公元前770年到453年吧。那个时候统治精英阶层的婚姻是怎么回事？背后又有哪些权力、社会结构在起作用？我们今天的讨论呢，主要是参考了梅尔文·撒切尔博士的一篇非常经典的研究文章。对，这篇文章收录在一本书里，叫《中国社会中的婚姻与不平等》，是卢比沃森和伊培霞编辑的，加州大学出版社1991年出的。撒切尔博士呢，他是犹他家谱学会的，研究周代历史很久了，是个资深学者。是的，而且，说起塞切尔博士，他这样研究之所以特别经典，不光是学术本身做的扎实，还在于他背后的一种精神吧。哦，怎么说？他的儿子也是一位知名学者，杰森·撒切尔教授，曾经就这么描述过他父亲，说他快80岁了，还在学术会议上分享他一辈子的心血，就是收集和整理我们中华民族的家谱。哇，一辈子的心血。对，特别是那些快要失传的家族记录，他收集整理的可能是全世界最大的一批濒危的中国家族记录。比如当年在台湾，他就组织人挨家挨户的去收集那些随国民党迁台家庭的记录，然后把他们数字化，让全中国还有海外的华人都能寻根问祖。这个太有意义了。是啊，就像他儿子说的，他父亲的工作提醒我们，人文学者通过梳理我们共同的历史和叙事，帮助我们理解我们从哪儿来，我们是谁，以及我们未来会成为什么样的人。
这种贡献不管是在口述时代、纸质时代还是数字时代都特别重要，因为它触及了人了解自己根源的那种，就是说最基本的需求。我明白了，所以这篇文章能够成为经典，也是因为它体现了这种非常严谨的精神。它不是光看那些礼仪文件怎么说，对，而是真的沉下去分析《春秋》和《左传》这两部最重要的原始史料，把里面记载的所有150例婚姻，特别是那120例涉及王室、诸侯这些统治家族的婚姻，都做了非常细致的分析。一点没错。所以如果你是刚开始接触学术研究，正要开始自己的探索旅程，那这篇文章绝对是一个非常好的范例，教你怎么用第一手资料，怎么去做细致的分类，怎么分析里面的社会政治关系，还有进行历史比较。是的，非常值得学习。所以呢，不管你是不是订阅了我们的频道，我们都非常建议你花点时间去读一读这篇构思精巧、论证严谨的文章。文章的连接就在下面的节目信息栏里。好了，那我们现在就来梳理一下这个有点复杂的联姻世界。关于这些春秋时期的精英婚姻，你首先注意到的是什么？最让你印象深刻的？最引人注意的，我觉得是它那个等级制度，还有它的结构，非常森严。它远不是我们想象的那种简单的一夫一妻制。哦，不是一夫一妻？不是的。当时的统治者，比如像晋文公，他可以同时拥有好几位夫人，就是说主要的妻子可以有好几个，同时有好几位正妻。哎呀，那这后宫不就肯定很复杂吧？对，这通常是出于政治联姻的需要，比如说要跟哪个大国搞好关系，或者是为了确保有继承人嘛。而且除了夫人，还有一种叫佣。佣那是什么？佣通常是主妻的侄女或者妹妹，跟着主妻一起嫁过来，他们的地位呢比夫人低一点，但高于妾。这其实是为了给这个政治联姻上个双保险，确保主妻娘家的血脉能够延续，或者说进一步巩固这个联盟。哇，这听起来人的关系，特别是女性，更像是政治筹码。可以这么理解，它深刻地揭示了在那个时代，血缘关系对于维系政治同盟有多么重要。个人的情感选择，相对来说是次要的，地位最低的那就是妾了。妾，对，妾的来源就比较多样了，有时候甚至被看作是财产。比如史书里有记了，那个晋国大夫魏武子快死的时候，甚至想让他那个没有儿子的爱妾给自己殉葬。天哪，殉葬！所以说，女性的身份，她是夫人、是婴还是妾，就完完全全决定了她自己还有她子女的未来，尤其是在继承权这个问题上，是吧？对，完全是这样。继承规则理论上讲是优先考虑嫡长子，也就是正妻生的长子。但是你想，有好几位夫人的情况，再加上还有婴还有妾，那实际操作起来肯定就充满了权力的争斗。那肯定，如果有人想把妾的地位提上来，或者是想立庶出的儿子做继承人，在当时就会被认为是不合规矩，是破坏礼法，很容易引起政治动荡。有例子吗？有啊，比如鲁哀公，他就想立自己的爱妾做夫人，结果就遭到了大臣们的强烈反对。这背后其实就是大家对政治秩序稳定的那种深深的担忧。我明白了，这么看来，这些婚姻的核心恐怕跟我们现在理解的，就是说个人情感啊、爱情啊，关系真的不大，更多的是一种赤裸裸的政治算计。很大程度上是的。你想想那个时代背景，诸侯国林立，互相打来打去，争霸嘛。那婚姻就是一个非常重要的手段，用来干嘛呢？缔结联盟，交换利益，巩固权力，就是个工具。对，就连那些很复杂的，比如聘礼啊、嫁妆仪式啊，也不仅仅是家庭内部的事儿，它其实是一种公开的仪式，用来展示家族的实力，确认社会等级，把这种政治关系给它具体化、仪式化。原则上虽然说同姓不婚，就是同一个姓氏家族的人不通婚，但是为了政治利益，这个规矩也经常被打破。比如晋平公，他就娶了4个同姓的女子。哇，为了利益，规矩也可以放一边。那么理解了这些复杂的规则和实践，对于我们理解那个社会到底意味着什么呢？能加深到什么程度？
它为我们揭示了一个怎么说呢？一个婚姻和政治权利、社会分层高度捆绑在一起的体系。女性在这个复杂的结构里面，其实扮演着很多种角色。她们既是家庭成员，同时也是她们原生家庭，也就是她父亲那边的家族非常重要的政治棋子，或者说是代理人。就像我们开头讲的那个故事里，那位女性面临的那种冲成的两难。是的，太难了。而撒切尔博士的研究，它的价值就在于通过对大量史料的这种细致入微的梳理和分析，挑战了一些过去可能过于简化的理论，比如说那种认为存在固定模式的母舅生女单向通婚理论。它向我们展示了春秋时期的联姻实践其实远比我们想象的要灵活，也要复杂得多。真的是一个错综复杂的系统，它深刻地塑造了当时的权力格局，还有家庭生活的形态。的确是这样。回顾像撒切尔博士做的这种细致的研究，也让我们再次体会到这种严谨的去探究历史细节的工作，它的价值所在。它帮助我们理解那些塑造了无数个体生命轨迹，也影响了宏大历史进程的社会结构。所以对于正在收听的你，特别是如果你正考虑开始自己的研究和探索，不妨可以留意一下，深入的去考察某一个具体的社会实践，比如说这里的婚姻制度，它到底是怎么帮助我们洞察更宏大的社会动态和历史变迁的。对，这也为你留下一个值得回味和思考的问题。虽然像春秋时期那样，一个国君可以同时拥有好几位夫人的这种做法，后来是消失了。但是婚姻作为一种政治策略、经济策略的这种功能，以及女性在她原生家庭和她丈夫家之间那种微妙的忠诚和身份的张力，这些东西是不是在后来的历史上，甚至在我们今天的生活里，依然以不同的貌样在持续存在着呢？值得我们想一想。